Hello everyone, welcome to OASHUB. So आज जो आम टेस्ट सीरीज डिस्कशन करिबा OPSC मेंस 2023 पे आम ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मेन टेस्ट सीरीज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. तो मेन टेस्ट सीरीज जदि आम कहबा जोटा कि हमर फास्ट टेस्ट थिला जो वर्ल्ड जियोग्राफी रो जियोमॉर्फोलॉजी ऊपर थिला एंड वी आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट इनटू हाफ एंड हाफ अर्थात कोन कि लेट्स से 120 मार्क्स 125 मार्क्स रो आम करूछु and there would be also prelim test, so combo test approach kara jauchi. So initially we are doing so not what I would say full mark test series, main test series we are doing half one, and gradually as we will move ahead in the test series and the exam jete tomorrow close ko asibo, that time we will have that sort of approach where we will try to have the full length test series. Now, as of now, we are doing this kind of approach so that easily a candidate can but easily cover the syllabus. For the I would say the test point जो syllabus अच्छी सेटा को से easily cover करी पारिबे, and that is why we are following this approach. 1.5 hour रहिबो तुम डेट 24 तुम देखि पारो 24 मार्च 2024 रे कंडक्ट करा हितला. क्वेश्चंस हम देखि दो 1 to 10 क्वेश्चन इज करेज 10 मार्क्स एंड जदि आम तापर क्वेश्चन देखा सो दैट वुड बी 15 मार्क्स क्वेश्चंस रहिबो. ओके, सो हियर यू कैन सी, सो दैट वुड बी, so and this question would be 15 marks of questions. So these are the questions, so let's see. So jodi ame ebe questions part ko asiba, as you can see these questions are the geography related questions. First question we will comes to the significance of the coastal landform. So देखो means answer writing रे कोन थाए कि जमती कि हमको लेट्स से 150 वर्ड्स रे एक आंसर को लिखे थे, तो वी विल हैव वेरी लेस टाइम टू आंसर देयर. एंड जो मैंने इथर भी मेंस लिखी थी वो ऑब्वियसली यू माइट हैव एक्सपीरियंस देयर कि टू क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट दैट मच, बट क्वेश्चंस वर इजी एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन. बट व्हाट वाज द चैलेंजिंग देयर इज दैट टू अरेंज द माने जो डेटा फैक्ट्स दरकार गोटे आंसर पई ताको अरेंज करिबा, ताको लिखिबा, पेपर को एंड करिबा, दैट वाज pretty challenging. जदि आमे देखबा इट वाज ह्यूज लेंदी पेपर्स यूज्ड टू बी. सो सही आम कह कि मेन्स टेस्ट सीरीज जड़े जी आज कंटिन्यू करुच्ची ताद्वारा दुईटा बेनिफिट्स हम. एक तो आपंकर सिलेबस कवर हो. ट्रू फैक्ट्स इज दैट ये जो सिलेबस कवर हवा द्वारा बोथ योर प्रिलिम्स एंड मेन्स दुईटा कवर होमती ना कि दैट डज नॉट मीन्स लेट्स से समबडी इज राइटिंग दिस टेस्ट ओबियसली जो कहुच्छी आगुरी कि वर्ल्ड जियोग्राफी तुम जियोमॉर्फोलॉजी टेस्ट हम. सो दैट जड़े जियोमॉर्फोलॉजी जो पढ़ी आसूची सो प्रिलिम पार्ट्स भी तो कवर हो ना. तो आम कह बोथ पार्ट्स इज गोइंग टू बी कवर हियर. इट्स नॉट लाइक दैट कि सर्टन पार्ट्स वुड बी कवर्ड एंड सर्टन पार्ट वुड बी लेफ्ट. सो इट्स ए विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द प्रिलिम्स एंड फॉर द मेन्स. सो आउ मु टाइम नेबिनी. सो लेट्स मूव टू द डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ द कोस्टल लैंडफॉर्म. Now when we comes to the significance of the coastal landforms, तो coastal landform कौन है? देखो coastal landforms that could be your beach. I would say what beach मध्य coastal landform. It's a bay. Let's say it's a bay is a coastal landform. It's a shallow water body, and okay, so that would be there. Sea cliff, that would be what your cliff ही परे. So that is the sea cliff. That would be wave caught platform. That would be what यदि हमें कहबा wave caught platform ही परे. So these are the different types of, I would say, both the depositional like the beaches kotha nahi jo sand dunes, sand bars, that here would be what sand bars and the splits जाओ कमे कुछ split dunes तो देखा जीवो नहीं. Okay, because dunes तो तुमको कोठी देखा जो beaches रो ऊपर part देखा जीवो. Okay, that is not the part of beach. Done. So beach would be the one of the factors that would be what the landforms रे, that means हमें कहिबा the beaches तुमको आसीबो bay देखा जीवो, cliffs देखा जीवो, wave cut structure, sea देखा जीवो, lagoon देखा जीवो. There would be what lagoon as well. Lagoon मध्य formation हबो, that is depositional landform. So lagoons देखा जीवो, bay देखा जीवो, bites देखा जीवो, cliffs देखा जीवो, wave cut platforms देखा जीवो, beaches देखा जीवो. Okay, now these would be the, I would say, what some island splits देखा जीवो, sand bar देखा जीवो. So these are the landforms जोटा कि हमें किछि landforms कहि देली. Significance कौन रहबो? देखो significance would be there. For the significance, let's say beach जो छी कोठी, तो obviously हमें कहबा for example minerals. Obviously we will have minerals in form of salt है परे, कि से मोनाजाइट सैंड, थोरियम है परे,
other heavy metals है पर these are the what minerals you are getting from here. तो minerals form करस. Apart from that, I would say energy, that could be wind energy है पर, that could be tidal energy है पर, that could be sea surface temperature है पर. Apart from that, hydrocarbons also, I would say that this region will have also what hydrocarbons तुमको देखा जीवो. Coastal aquaculture, that would the region will have the aquaculture, weed cultivation ही परिबो, stream cultivation ही परिबो. So obviously a number of economic activities, that means प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना को हमें एठी मध्य लिखि परिबा. So that will have the benefits of the प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना. Okay, that would be also benefit from here the coastal landform. So I would say from the port formation of, again I would say for the port formation कथा नहीं जाओ, that will have the canal कथा नहीं जाओ, जेमती हमरा water ways को तमे मध्य convert करी परिबो ताकू हमें. Okay, so aquaculture कथा कही परिबा, mariculture कथा कही परिबा, viticulture कथा कही परिबा, ecotourism कथा कही परिबा. Okay, these are the significance, and apart from that the ecological significance also there. So ecological significance in terms of, like, let's say the Gulf of Munnar katha nahi jao, or let's say Gulf of Mannar katha nahi jao, Gulf of Kutch katha nahi jao. So these are the what I would say areas is having high biodiversity. So obviously from to ame कहबा कि जदि economic point of view जदि छाड़ी के जिबा environmental point ru, so these are also I would say from the environmental point of view that is having also the benefits also lies there. Okay, so that also the benefits lies. So this କାରଣ କେତେ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ. ଦ୍ୟାଟ୍ would be, ହଁ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କି 7516 ଲଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ଗୋଟେ ଡେଟା ଏଥିରେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଆଡ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ କି ଏପଟେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଠୁ ନେଇକି ଗୁଜରାଟ ଲଙ୍ଗ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅଛି, ଏସବୁ ରିଜନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖାଇ ପାରିବ. ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ would be ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ. ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଏଠି ଲେଖିପାରିବ, ଏଠି ତୁମେ कोस्टल बट जोटा आम कह स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ कहे CRZ कोस्टल ठीक CRZ लिखनी दैट वुड बी कोस्टल इकोनॉमिक जोन. सो जमती आम थला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये समझ कोस्टल इकोनॉमिक जोन. ओके, तो CEZ ही परिबो, सेटा मध्ये ही परिबो. अपार्ट फ्रॉम द SEZ CEZ मध्ये ही परिबो. तो ये सब पार्ट्स को आम एठी आंसर रे लिखि परिबा एज द आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा कि condition for the formation of the desert and discuss the depositional landform. Okay, तो जदि हमें कहबा depositional landform of the desert topography of what desert topography ना फास्ट कथा देखो desert formation पे condition कौन. तो ये भले क्वेश्चंस को लिखिया पे हम पाखरे बहुत ही कम टाइम था, एंड द क्वेश्चन इज प्रीटी लेंदी वन. ये क्वेश्चन को जदि मु सेकंड क्वेश्चन कहबी 10 मार्क्स रो क्वेश्चन, बट देखो बहुत लेंदी क्वेश्चन, तेणु बेटर को पॉइंट वाइज लिखिकी सारिबा बेटर हम कि डेजर्ट फॉर्मेशन पे जो कंडीशनटा अच्छे ना ताको पॉइंट वाइज लिखि दियो. फॉर एग्जांपल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होइतवा दरकार, से गोटे लीवार्ड साइड होइतवा दरकार, इंटीरियर लोकेशन होइतवा दरकार, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट हवा दरकार, लीस्ट रेनफॉल हवा दरकार. सो दीज आर द कंडीशन डन. ये जो सब कंडीशन सब रही जोटा कहली ये दिस पुट दिस कंडीशन. ओके, ये सब कंडीशन को हमको पुट करिया पड़िबो. तारे कौन कौन कहली कंडीशन. फॉर एग्जांपल एज ए सेड कि हाई प्रेशर, वी नीड व्हाट हाई प्रेशर, वी नीड व्हाट लीवार्ड इफेक्ट, वी नीड व्हाट दैट कुड बी द कोल्ड करेंट मध्ये गोटे फैक्टर्स लिखि परिबो. वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट लोकेशन ही परिबो, इंटीरियर लोकेशन ही परिबो. तो मेनी फैक्टर्स आर देयर. तो ये सब तमे फैक्टर्स का हमको गोटे पार्ट. देन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, तो ये गोटे पार्ट है आंसर. सेकेंड पार्ट व्हाट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द डेजर्ट. सो डेजर्ट रो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स व्हाट दैट इज द सैंड ड्यून्स, दैट इज व्हाट सैंड ड्यून्स. तो डेजर्ट रो जति हम देखो जस्ट अ मिनट. सो जति में तो जब हम देखा कि डेजर्ट रो जो सैंड ड्यून्स रही दे आर बेसिकली द व्हाट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. तो जो सैंड ड्यून्स रही दे आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म. सो दैट सैंड ड्यून कुड बी जदि आम से जो सैंड ड्यून्स को कहबा, सो दैट कुड बी जमती तुम कहीपर कि हाँ सेटा गोटे बर्षान हो पारे, दैट कुड बी बर्षान हो पारे, दैट कुड बी सिंपल ड्यून हो पारे, सेटा गोटे तुम ओएसिस हो पारे है ना. दैट कुड बी ओएसिस गोटे हो पारे. ओएसिस टा ऑब्वियसली इरोजनल पार्ट, ओएसिस को आड करबो नहीं इरोजनल. सैंड ड्यून डिफरेंट तुम लिखिपर जमती मुझे कहली एथरे कौन थाए स्टार ड्यून हो पारे
ବର୍ଷାନ ହେଇପାରେ, ସିମ୍ପଲ ଡ୍ୟୁନ୍ ହେଇପାରେ, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡନାଲ ଡ୍ୟୁନ୍ ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डिफरेंट आम कह डिपोजिशनल जेते तुमर ड्यून्स अच्छी ना सब ड्यून्स को लिखि दियो ऑल द ड्यून्स बस दैट वुड बी डिपोजिशनल आम कहवा ओके देन आसबा जियोमॉर्फिक फोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस द नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा जियोमॉर्फिक फोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस ओके जियोमॉर्फिक फोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस को जदि आम डिस्कस करबा कि जियोमॉर्फिक फोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस डन ना जियोमॉर्फिक फोर्सेस एंड सिग्निफिकेंस को जदि हम ये पार्ट को डिस्कस करबा कि प्रथम कथा जियोमॉर्फिक फोर्सेस कौन जियोमॉर्फिक फोर्सेस वुड बी डिवाइडेड इनटू टू इंडोजेनेटिव एक्सोजेनेटिव्स ओके obviously हम कहबा इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक there would be two types of forces and that exogenetics को जदि हम देखिबा so they are what weathering erosions and डिपोजिशंस ये तुम वेदरिंग इरोजनल डिपोजिशन वेदरिंग को पुणी भाग कर जब तुम केमिकल्स हो पारे बुझे केमिकल्स वेदरिंग इरोजन्स हो पारे दैट कुड बी फिजिकल्स हो पारे दैट कुड बी बायोलॉजिकल हो पारे सो इट कुड बी केमिकल हो पारे दैट कुड बी फिजिकल हो पारे दैट कुड बी बायोलॉजिकल हो पारे सो एटा एक्सोजेनेटिक सेमती इरोजन सेटा गोटे तुम वाटर इरोजन हो पारे गोटे रिवर हो पारे स्नो हो पारे ग्लेशियर हो पारे waves ही परे these are the deposition so these are exogenetic forces now when it comes to the endogenetic forces in the endogenetic forces रे हमें कौन ऐड करिबा in the endogenetic forces what will be there so in endogenetic forces रे जति हमें ऐड करिबा for example हमें ताकू दी भाग रे भाग करिया गोटे हला तमरो sudden force that is what sudden force okay and गोटे रेबो जा को हमें कहचे catastrophic what catastrophic आउ गोटे रहबो डायस्ट्रॉफिक और स्लो फोर्स ना जो कैटास्ट्रॉफिक बा सडन फोर्स अंडर कौन आसबो अर्थक्वेक सुनामी ओके लैंडस्लाइड्स वगैरह ये तुम लैंडस्लाइड तुम आसबनी अर्थक्वेक एंड सुनामी देन जो आम डायस्ट्रॉफिक को आसूचे ताकू आम भाग करवा डायस्ट्रॉफिक वुड बी दैट मीन्स आम जो डायस्ट्रॉफिक को आसवा तो ऑब्वियसली सडन फोर्स होगा नेक्स्ट जहाँ को आम कहे दैट मीन्स आपको आम दी भाग भाग कले गोटे है सडन फोर्स आउ गोटे है ग्राजुअल फोर्स सो ग्राजुअल फोर्स को जो आम नहीं जा दैट कुड बी आम कहवा अगेन ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक तो ये एपिरोजेनिक हो पारे ओरोजेनिक हो पारे ओरोजेनिक को दी भाग भाग करबा दैट कुड बी कंप्रेशनल हो पारे दैट कुड बी टेंशनल फोर्सेस हो पारे सेमती एपिरोजेनिक को भाग करबा अप रैपिंग हो पारे डाउन रैपिंग हो पारे सो दीज आर द व्हाट जियोमॉर्फिक फोर्सेस ना सिग्निफिकेंस कौन देखो सिग्निफिकेंस सब इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस होची कौन कि द लैंडफॉर्म्स आर द एक्सचेंज बिटवीन व्हाट एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस so landforms are the relation between endogenetic and exogenetic forces बस यही पॉइंट होची मेन पॉइंट कारण आज आम सपोज देखुचे कोटी गोटे हिल होगा कोटी प्लाटू होची जहाँ भी होची ओशन ट्रेंज कथा नहीं जाओ ऑल द लैंडफॉर्म्स दे आर सिंपल द सिग्निफिकेंस होची आ द्वारा ही पड़ुची द ऑल द लैंडफॉर्म चाहे गोटे डेजर्ट हो पारे अच्छा से डेजर्ट कथा छाड़ जाओ गोटे आम हिमालय भले गोटे माउंटेन्स कथा नहीं जाओ गोटे ओशन ट्रेंच कथा नहीं जाओ कि आम वैली फॉर्मेशन कथा नहीं जाओ सो दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ व्हाट सो दे आर फॉर्मिंग सो बिकॉज ऑफ योर इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रो एक्सचेंज कौन उत्तर होची एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस दैट इज बिकॉज ऑफ द व्हाट एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस जो ही होची तो से आमको लिखार अच्छी कौटी माउंटेन होची कौटी रिफ्ट वैली होची कौटी तुम वोल्केनिक एरप्शन होची कौटी हट मतलब आम कहवा जमी हटस्पट होची कौटी तुम आइलैंड फॉर्मेशन होची तो ये सब सुनामी अर्थक्वेक जहाँ होची तमें ये दीज आर व्हाट सिग्निफिकेंस आम आपको ऐड करदेबा तो होप हो देन कजेस ऑफ अर्थक्वेक समस्ते जानिछ एंड इंपैक्ट्स बहुत इजी क्वेश्चन ये तो ताकू मु डिस्कस करूँ से तुम प्लेट टेक्टोनिक कजेस ऑफ अर्थक्वेक आम कौन डिस्कस करवा सेटा तुम गोटे मेटेराइट फॉल हो पारे सेटा तुम एंथ्रोपोलॉजी कजेस लाइक आम कहवा माइनिंग हो पारे डैम कंस्ट्रक्शन हो पारे न्यूक्लियर टेस्ट हो पारे गोटे फायर हो पारे
volcanic eruption ही परे natural causes को जदि हम देखिबा प्लेट टेक्टोनिक रो प्लेट डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज रे डिफरेंट टाइप रो हम कहबा मध्य होची तो डिफरेंट सो दैट वुड बी आल्सो द कॉजेस को हम देखिबा ना सुनामी जदि हम देखिबा सुनामी ओबियसली तुम जानछ बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक द्वारा ही सुनामी होता है इफ दैट अर्थक्वेक रो एपिसेंटर जदि हम कहबा वाटर रे रहउची सो दैट विल लीड टू द व्हाट सुनामी ओबियसली ना सुनामी को कोन कहवा जे हार्बर वेव्स बोली कहवा जे जापान रे ताको जापान रे कोन कहवा जे हार्बर वेव्स बोली कहवा जे ना इंडोनेशिया रे काहे कि सुनामी अधिक हुए देखो इंडोनेशिया रे हबार रीजन होची प्रथम कथा रिंग्स ऑफ फायर रे आसुची इंडोनेशिया दुई रे इंडोनेशिया इज सिचुएटेड इन सच ए वे दैट दिस इज आल्सो कमिंग अंडर इंडियन आमे कहबा दैट इज द जाभा ट्रेंच जोठी तमर अछि जाभा ट्रेंच so this side ame कहबा that Indian Ocean is subducted below and that side ame कहबा Pacific Ocean. So here is what all around Indonesia there is subduction zone. So because of number of subduction zone merges there, so obviously ke matlab more earthquake prone zone. So this zone is what highly earthquake prone zone. So because of I would say what earthquake, so that will lead to the tsunami. Done. ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଲେଖିବ କି ତାର ଯେଉଁ ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛେ ଏସବୁ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି ପାସିଫିକ୍ ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ତାର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ର ଜାଭା ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଏପଟେ ସବଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଓବିୟସଲି ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସବଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତାର ତିନି ପଟ ସାଇଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା ଥ୍ରୀ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସବଡକ୍ସନ୍ ଜୋନ୍ ଓବିୟସଲି ସୁନାମି ହେବ ହିଁ ହେବ ଦେନ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦ थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस देखो जो थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स जहाँ को हमें कहा जाए कोठी होचे मेंटल रे देखा जाए जहाँ को हमें को अथर होल थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स नाउ व्हाट एग्जैक्टली दैट थर्मल कन्वेक्टिव करेंट लेट्स से हेला अर्थ तमरो ये हेला कोर एंड जो मेंटल रे कोन होची एमती मेंटल रे कोन होची एमती करेंट सबु बुलुची जहाँ को है ना तो ये क्रॉस्ड है कि ऊपरटा तमरो क्रॉस्ड है जो मझेटा मेंटल तळ रहला कोर जो हमरो मेंटल रे कोन होची और जो मेंटल अछि इन द मेंटल लाभा सब जहाँ को हमें कहचे लाभा एठी तो हमें लाभा कहबनी एठी को कोन कहबा magma the magmas are rotating the magmas are what rotating and the magmas are rotating there where here in what a particular जगह जदि हमें magmas को देखुचे they are rotating as the magmas are rotating obviously that will lead to the producing the current that lead to the what production of the current what current that is the magma current that is what magma current and because of that magma current so your that is the what magnetic field your magnetic field comes to exist तादर कौन होची magnetic field formation होची आउ कौन होची ना आदर आमरो जेते इंडोजेनेटिक फोर्सेस आमर इंडोजेनेटिक फोर्सेस रो मध्य में कहबा ओरिजिन होची तो ओरिजिन ऑफ द इंडोजेनेटिक फोर्सेस देन हमें कहबा कि जो आमरो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ व्हाट सरफेस ऑफ द अर्थ जो सरफेस रो डिफॉर्मेशन वगैरह होची दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट सो दैट इज व्हाई as we are having the magnetic force कथा नहीं जाओ कि तमरो जे ऑरोराज फॉर्मेशन कथा नहीं जाओ डिफॉर्मेशन कथा नहीं जाओ शेप जो चेंज होची पांजिया फॉर्मेशन होची ये सब जहां चेंजेस होची that is because of that thermal convective currents or that will indirectly leading to the production of what endogenetic forces that is the importance now comes to the rings of fire जेतरा में रिंग्स ऑफ फायर तो समस्त को जाना चाहिए कि व्हाट पैसिफिक ओशन रो चारिपटे जो वोल्केनिक एरप्शन होती दैट इज द रिंग्स ऑफ फायर ओके जदि हम आपको देखिबा कि पैसिफिक ओशन रो जो चारिपटे वोल्केनिक एरप्शन होची व वोल्कानोस एथरे कोन रहउची तमरो that volcanoes around the Pacific Ocean को हमें कहते rings of fire which itself constituent what 65 to 70% of the total what total volcanoes of the earth एठी आसी जाउची and that is why we call this the what rings of fire सेथरे तमे चाहे से मतलब जापान कथा नहीं जाओ क्यूराइल जापान कथा नहीं जाओ क्यूराइल कथा नहीं जाओ एल्यूशियन कथा नहीं जाओ अलास्का कथा नहीं जाओ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कथा नहीं जाओ साउथ अमेरिका कथा नहीं जाओ सेंट्रल अमेरिका कथा नहीं जाओ न्यूजीलैंड कथा नहीं जाओ इंडोनेशिया कथा नहीं जाओ फिलीपींस कथा नहीं जाओ these all the countries are regions coming under the what rings of fire
region रे आसुची and that is why this region is prone to the what earthquake and the volcanic eruptions tsunami as well. Now एठी काहे की now because of all around what there is subduction zone. Now comes to the A sweeps shadow zone. Now देखो next time आसबा A sweeps रो shadow zone. Now shadow zones कौन shadow zone जितना मैं discuss करूँ that is the P waves and the A sweep shadow zone. Here you have here the clear cut question is mentioning that is A sweep shadow zone. Here you can have the ideas what A sweeps or shadow zones कथा से कोई ची कि why that is the smaller one. तो obviously यदि अर्थ को हमें देखिबा the A sweeps or जो shadow zones तो मैंने भी देखी तो NCERT रे that is the 105 degree. What it would be up to 105 degree. So that would be the shadow zone. The baki rest of the regions, so this part A sweeps does not reaches in this part. And A part को से पहुंची पारे नहीं. Now why? Now this is because of its nature, because of its properties, because of its what properties, because of its nature. तार जो nature जदि हमें discuss करिबा ये कौन करे ना ये liquid रे जाई पारे नहीं, as it can't move in the liquid, that is what it's like a light wave, it's like a light wave the light जेमती opaque जिनस रे जाई पारे नहीं सेमती एस वेव कांट मूव्स इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मेंटल जो हमारा मेंटल अच्छे लिक्विड रे जाई पारे नहीं एंड दैट इज व्हाई इट व्हाट मेक्स द व्हाट दैट इज द स्मॉल सैडोजन. तो एटा कोन करे एटी एठी हम कहबा सो आर कोन होची सैडोजन टा एटा टिके क्वेश्चन भूल होची ये स्मॉल सैडोजन नो कारण जे हम देखिबा कि जो सैडोजन्स कहले कोन जोठी से पहुंची पारुन so it's a large saturation. तो एटा टिके कौन कर दो करेक्ट कर दिया ये क्वेश्चन टा एटा लार्ज सैडोजन हबो एटा स्मॉल नु कारण जो पी वेव्स था ये एठी भी पहुंची पारे पी वेव्स केवल 105 रो 145 भितर पहुंची पारिबनी तो दैट मींस दैट वुड बी द पी वेव सैडोजन. तो ये क्वेश्चन भूल अछि तो टिके करेक्ट कर दे क्वेश्चंस को. तो दिस वन इज व्हाट करेक्ट कर दो. तो दिस इज व्हाट लार्ज सैडोजन. सो दैट हमें कहबा बियॉन्ड 100 ताले हमर टोटल टा केते 360 डिग्री अर्थ टा टोटल केते 360 डिग्री आउट ऑफ 360 ओनली 105 डिग्री जाए पहुंची पारुछि बाकी एरिया पहुंची पारु नहीं. सो बाकी एरिया टा कोन हैला शैडो जोन हे गेला जोठी से पहुंची पारु नहीं. सो दैट मींस हमें कहबा एस वेव से कोन लार्जर शैडो जोन अछि. सो दैट इज हैविंग व्हाट लार्ज शैडो जोन. सो करेक्ट कर दे दिस क्वेश्चन. एंड व्हाई ना बिकॉज से मेंटल देकी जाई परिबो नहीं जेहेतु से मेंटल रे जाई पारु नहीं मेंटल रे काहे की जाई परनु कहना तमने समस्त पढ़ियो जेतरो कोनसी जिंस रेयर रु डेंसर मीडियम को जाए दैट विल्स टुवर्ड्स द मिड हमें सेंटर को जीवो बट टुवर्ड्स द सेंटर एंड जेतरो कोनसी जिंस डेंसर रु रेयर मीडियम को जाए अवे फ्रॉम द सेंटर को थाए. तो एई कांसेप्ट को जदी एठी हमें फुट करिबा सो दैट इज व्हाई द एस वेव विल हैव द लार्ज सैडोजन. होप यू आर गेटिंग मी. Now comes to the कास्ट टोपोग्राफी. ये जितने आम कास्ट टोपोग्राफी कहवा जहाँ कहुए कौन ना लाइमस्टोन टोपोग्राफी. तो देखो कास्ट टोपोग्राफी डिस्कस कर कही डिस्कस अर्थात जहाँ जाच तुम लिख ताप फॉर्मेशन कंडीशन कौन जमी गोटे से रिवर रहा दरकार डन से लाइमस्टोन बहुत रहा दरकार वाइड स्प्रेड से वाटर टेबल तले रहा दरकार डन से रॉकटा जॉइंट होता दरकार से होल आम कह पोरोसिटी नथिबो से जॉइंट्स थिबो. तो दीज आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी आम जहाँ कहचे लाइमस्टोन टोपोग्राफी. इंडिया रे कोठी देखा विंध्या रेंज रे देखा नॉर्थ ईस्ट रेंज रे तुमको नॉर्थ ईस्ट रे देखा साधारणतः कार्बोनेटेड रॉक रे अधिक देखा जाए ना. आर जदि लैंडफॉर्म को आम डिस्कस करबा बोथ ऑब्वियसली आम कहबा दैट इज इरोजनल obviously it would be erosional plus depositional landform. तो इरोजनल रे जमती तमरो फॉर एग्जांपल सिंक होल सैलो होल डो लाइन पोल जे कास्ट वैली ये सब तुम लिखि दे परिबो डन. तो सेमती आम जी आम टोपोग्राफी स्टालेक्टाइट हेगला स्टालेक्माइट हेगला विंडो हेगला आर्क तुमको देखा रिवर्स देखा कर्टन्स देखा पिलार देखा. तो दीज आर द व्हाट डिपोजिशनल फीचर ऑफ द कास्ट टोपोग्राफी रो. तो एमन को कौन कह जाए कास्ट टोपोग्राफी रो डिपोजिशनल फीचर. तो ऑब्वियसली हमें कास्ट टोपोग्राफी कंडीशन तार लैंडफॉर्म सब लिखिदेले तुम आंसर हो. बाकी दुनिया रे कोठी देखा जाए जमी तुम यूगोस्लोविया रे देखा मेक्सिको रे देखा यूएसए रे देखा इटली रे देखा एंड खास करी एड्रियाटिक सी तुमको द हाईएस्ट कंसंट्रेशन वुड बी एड्रियाटिक कोस्ट. ये कोठी देखा एड्रियाटिक कोस्ट जोटा हमर
एड्रियाटिक सी अच्छी जो तुम इटली अच्छी समस्त जानच कि इटली जो इटली अच्छी इटली रो ईस्टर्न साइड रे जो एड्रियाटिक सी कहीं बाकी मेडिटेरियन सी रो पार्ट समस्त जानचे सिसिली आइलैंड अच्छी सो ओके दैट रीजन कि होल रीजन टा कौन मेडिटेरियन सी तो मेडिटेरियन सी रो आम देखिए चारिपटे ठीक देन आसो फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशन अब देखो अटलांटिक ओशन जदि आम कहवा द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ओके यही वर्ष ओपीएससी मध्य पचार अटलांटिक ओशन जोग्राफी ऑप्शनल रे तो ये बहुत सारा क्वेश्चन जोग्राफी ऑप्शनल रे आसी डायरेक्ट जहाँ तुमको ये पढ़ाई डन एथरे किसी भी डाउट नहीं ना जदि आम ओपीएससी को देखा कि जहाँ भी हो कि अटलांटिक ओशन रो फॉर्मेशन कौन ना अटलांटिक ओशन हूँ सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जोटा कि तुम ए सेप जहाँ भी हो तो केमिति फॉर्मेशन है ना देख जिते आमर पांजिया थिला पांजिया जिते दी भाग भाग है दिस साइड वुड बी योर लरेशिया दिस साइड रहा तुम गोंडवाना ना लरेशिया गोंडवाना मझे कौन है ना टेथिस सी ओपन है टेथिस सी ओपन है जिते लरेशिया रु नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हो गला तो लरेशिया रु किए सेपरेट है नॉर्थ अमेरिका दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशन रो नॉर्दर्न पार्ट सेमिति गोंडवानु जिते साउथ अमेरिका अलग हो गला दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन दैट मीन्स हमें अटलांटिक ओशन कथा जदि डिस्कस करिबा कि द नॉर्थ अटलांटिक ओशन फॉर्म्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द यूराशिया दैट इज द व्हाट लरेशिया सेमती साउथ अटलांटिक रो फॉर्मेशन जदि हम डिस्कस करें बिकॉज ऑफ साउथ अमेरिका बा लैटिन अमेरिका मूव टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड ड्यू टू द टाइडल फोर्स ड्यू टू द व्हाट टाइडल फोर्स किए कौन अल्फ्रेड वेगनर 1912 तो अल्फ्रेड वेगनर 1912 कहले कि जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मैंने वेस्टवर्ड मूव कले बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्स so tidal force was the reason and that led to the what formation of Atlantic Ocean eta ko bas etik likhiar अछि then continental drift theory ro evidences कहछि देखो evidences कोन shape जोटा कि Atlantic Ocean रो जाको में को jigsaw feet rock ro age and rock ro structures living fossil fuels and also what non living fossil fuels जेमति तमरो ग्लोसोटेरिस जाको में को कोन ग्लोसोटेरिस साइनोग्राथस व्हाट साइनोग्राथस लिप्टोसोरस लेमिंग कथा नहीं जाओ देन हमें रॉक रो स्ट्रक्चर कथा नहीं जाओ मिनरल्स कथा नहीं जाओ गोल्ड माइन कथा नहीं जाओ ओके दीज आर द एविडेंसेस ओके देन जिग्सॉ फीट कथा नहीं जाओ जिग्सॉ फीट ऑफ अटलांटिक ओशन सो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ व्हाट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सेमती से कहछि प्लेट टेक्टोनिक तार लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ प्लेट है ना तो लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द प्लेट टेक्टोनिक अच्छा प्लेट टेक्टोनिक कौन तार लैंडफॉर्म्स कौन प्लेट टेक्टोनिक तो समस्ते जानिछ कि प्लेट टेक्टोनिक्स आर द व्हाट स्टडी ऑफ द प्लेट मार्जिन प्लेट रो मार्जिन को स्टडी को करिया को कहजे प्लेट टेक्टोनिक इज व्हाट द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेट फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेट सो इन प्लेट टेक्टोनिक जदि हम डिस्कस करिबा कि से कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स को तुम कहबो से तुम तीन टा आसो ओबियसली गोटे रहा फॉर्मेशन गोटे डिस्ट्रक्शन गोटे कंजर्वेटिव ये तीन टा जहाँ आम ये सब कौन जोन्स दीज आर द व्हाट जोन फॉर्मेशन जोन डिस्ट्रक्टिव जोन्स कंजर्वेटिव जोन जहाँ आम कहू डाइवर्जेंट बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड आम कहवा कौन दैट इज कंजर्वेटिव बाउंड्री तो आपको मध्य कहुए तो या तुम लिखिदेल लैंडफॉर्म कौन हम देख ये तुम वॉल्कानोज हो पारे दैट वुड बी वॉल्कानोज हो पारे ये तुम ट्रेंच फॉर्मेशन हो पारे लावा हो पारे प्लेन हो पारे प्लेटू हो पारे ओशन फॉर्मेशन होची न्यू ओशन अटलांटिक ओशन भाई एमती ओशन फॉर्मेशन होची ओके तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्रू आम जब कह कौन ये रिफ्ट वैली जमती होची आफ्रिकन रिफ्ट वैली भी हो पारुची ताले लैंडफॉर्म कौन हम जदि आम देखा लैंडफॉर्म इट कुड बी रिफ्ट वैली हो पारे इट कुड बी वॉल्कानिक माउंटेन हो पारे it could be volcanoes हो पारे it could be trenches formation हो पारे mid oceanic ridge formation हो पारे ओके हिल हो पारे प्लेटू हो पारे टाइबेटियन प्लेटू जमती आम कहवा कि आम डेक्कन प्लेटू कथा नहीं जो सो दीज आर व्हाट लैंडफॉर्म्स होप यू आर गेटिंग मी तो यही आमको कौन जो टेस्ट सीरीज आम डिस्कस जो टेस्ट सीरीज आम बनाऊे आ द्वारा कौन हम कि तुम डिस्कसन हो गला ओके अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको आंसर मिल तो जो ये मिल जाऊँगी तुम सिलेबस कवर हो ही जाऊँगी तो अल्टीमेटली आम जो मेन टेस्ट सीरीज जड़े दौची
दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कहीं आम राइटिंग प्रैक्टिस भी रही ओबियसली प्रिलिम पार्ट कवर ही जाऊँगी सो वी हैव स्टार्टेड आवर टेस्ट सीरीज आम ऑलरेडी स्टार्ट कर देचु जाको जॉइन करिया कथा जॉइन करदेव एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको मिल जिवो कोन नंबर ओके सो with this I will end the discussion meet you with another discussion thank you everyone